mindset. जब मुझसे टॉपिक का डिस्कशन हो रहा था with फिजा and शमा, so they were saying कि हम healthy eating पे बात करते हैं. मैंने कहा हमारे हजरत गूगल को सब लोगों ने इतना ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है कि बहुत सारी चीजें लोगों को पहले से ही पता है. So if I'll say कि okay fine, you don't need to eat McDonald's का burger, everyone would know कि हाँ McDonald's का burger नहीं खाना, right? So let's focus a little bit about how we can change our mindset towards healthy eating rather than restricting ourselves to certain food areas. So it's going to be a little interactive. I'll open mics for everyone to comment so that I'll make sure none of you sleep in this 1 hour, although it's a lunch hour break in most of the organizations. Namaz ka bhi break hai. But I'll try to make it as interactive as I can, even though it's a webinar, but I'll try my maximum effort that you guys don't sleep. So that was just a preamble. दुनिया भर में पहली slide, I was just checking the Muslim populations, और मैं चेक कर रही थी कि दुनिया भर में कितने मुसलमान हैं. So as per the 2021 का जो data है, there are 1.9 billion Muslim population across the world, which comprises of almost 24% of the world population. और 80% 80% मुसलमान ऐसे हैं जो कि रोजे रखते हैं. अब बहुत सारे लोगों का, जिसमें आप और मैं शामिल हैं, हम इसमें रोजों को अपने कैटेगराइज इस तरह करते हैं कि वो एक महीना है जिसमें अल्लाह बोलता है जितना मर्जी है खाना खा लो. और जाहिर है हमारे जो लवाजमात हैं और एशियन कम्युनिटी में रहने वाले लोग, जब तक पूरी टेबल सजे ना, हमें लगता नहीं है कि रमजान का इस्तेमाल किया गया. So we belong to that, but the mindfulness in eating or developing mindfulness eating habit is not about not having anything. It's about having everything which you want to have, but be connected to it so that your mind is full to what you are eating. बहुत दफा ऐसा होता है कि आप बहुत सारा खाना खा भी लेते हैं लेकिन आपको satisfaction नहीं मिलती. There are a lot of reasons why we don't find that satisfaction. This is what we are going to discuss. एक चीज, if someone can respond, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? No. Can you see my screen? No, Mama. Okay, all right. Can you do now? Yes, we can now. Oh, I shared it earlier. I'm sorry. Okay. All right. Can you see the screen now? Yes, we can see it now. Okay, perfect. Perfect. That sounds good. Okay. All right. And I'm pretty much audible to everyone. Farooq Saab, can you hear me loud and clear? Yes, we can hear you very clear and loud. Perfect. All right. So, we are going to talk about not healthy eating, but we are going to talk about mindful eating. Or Ramzan ka, we are not going to take Ramzan as an offset for us ke ye 12 महीने तो कर लेंगे, थोड़ा एक महीना अल्लाह मैंने दिया, उसमें जो मर्जी है खाना खा लेते. So we are not going to restrict ourselves or modulate our thinking patterns towards that. This is the month in which you are open to eat everything what you want, but rather than we are going to focus on how we can change our mind towards mindful eating. एक सूरह अल-अरफ की आयत नंबर 31 का एक बड़ा अच्छा सा मुझे रेलेवेंस मिला था, और उसमें ये बात बहुत वाज़ेह तौर पे बयान की गई है कि यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट. अल्लाह ने जो चीजें आपको इस दुनिया में बनाई है वो नेमत के तौर पे आपको दी गई है, but nothing should be done in excess, and same goes with food. And Allah does not like people who commit excess. So this is in relevance to everything, not only food. But since we are talking about healthy eating, I think that the principle of our healthy eating, especially not the mindset, but the healthy eating plus the mindset starts with this. So what is mindful eating? Anyone? Urva, I can see you on the screen. So the first name I can think of is Urva. Baska, a very different name, Urva. What do you think mindful eating is? Mindful eating, as per my understanding, is something which is good for your body and soul, which gives you benefit rather than giving any harm to your body. So eating with logic.
Simple. Okay, all right. Farooq Saab, you are one of the ones who was with us from the beginning जब से हमने जो ना ये सेशन स्टार्ट किया था. फारूक साहब, आपको क्या लगता है माइंडफुल ईटिंग क्या लगती है आपको? मुझे ख्याल है कि अब उम्र के हिसाब से होती है, जो भी आपकी उम्र उसकी इजाजत देती है. मेरे घर वाले कहते हैं अपना अपनी जिंदगी में से 3 चीजें निकाल दें, शुगर को भी, ऑयल को भी और स्टार्च को भी. अब बाकी जो बचता है वो खा लें. अच्छा, हम इस पे बाद में आएंगे कि क्या हम ऑयल को अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्या हम मिठास को बिल्कुल निकाल दें, शक्कर को निकाल दें, और क्या हम अपने जो ईटिंग है वो अपने एज के हिसाब से करें. हम उस पे अभी आते हैं, हेल्दी ईटिंग पे. लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ माइंडफुल ईटिंग. माइंडफुल ईटिंग किसको कहते हैं? माइंडफुल ईटिंग 7, मैंने इसको एक किताब है, इफ यू ऑल आर यू नो माशाल्लाह वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द book named as the 7 habits. So sorry for not abiding by the copyright. और मैंने इसीलिए आप आगे भी लिख दिया उसके कि although I am taking the name, but this all encompasses in 7 habits which you need to develop when it comes to mindful eating. Mindful का मतलब सबसे पहला तो ये होता है कि you are there, present at the moment. Now, if you all are there sitting, and you would have a lot of distractions and a lot of things going on, but if you can just feel the moment. For example, if I just ask you to maybe close your eyes for a few seconds, and would just ask you to do certain things, and you will feel what I'm really referring to. So if you can just close your eyes for a few seconds and just try to feel the right toe. Can you move it? Can you feel it? Okay. Now, can you feel the last finger on your right hand, which you call as the pinky? Can you feel it? Can you move it? Okay, now, okay, thank you so much. Thank you for a little exercise. This is what actually living in the moment is. हमारे साथ सबसे बड़ा मसला क्या है, जब हमारे सामने खाना आता है, so we don't feel it. We have so many distractions, or we are so much not focused on what we are doing at the moment. या तो हमारा टीवी खुला होता है, या हमारा सेल फोन्स बराबर रखे हुए होते हैं. I mean, this is a common practice. What we do not do is that we are not connected to what we are eating. जिंदगी में ये वही वजह है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में भिजाए भी गए, पेट की वजह से, खाने की वजह से, और यही वो चीज है जिसपे हम सबसे कम फोकस करते हैं. And but we need to understand that this is the fuel for your body and for your soul. हम सिर्फ इसलिए खाना नहीं खाते कि हमें जो है अपने बहुत सारे काम करें. हमें खाना की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम जिंदा रह सकें. अब जिंदा की बहुत ही वास्ट सी डेफिनेशन है. जिंदा सांस लेने वाला भी हो सकता है, और जिंदा वो भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं कि यार he is someone or she is someone with full of life. Now, to get that full of life, to get that connection with yourself and the world, you need to pay attention to everything that comes in front of you. And now that also includes when you are eating. How many of you actually, savor the smell of your food? हम इतनी तेजी से खाना खा लेते हैं जैसे हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा कम वक्त खाने पे जो ना सर्व किया जाता है. और ये if I'm not wrongly quoting it, अगर मतलब अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैं उस पर गलत कोट कर रही हूँ, कि बहुत सारे इंस्टेंसेस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर कोई खाना खा रहा हो तो वो सलाम का जवाब तक ना दे. I mean, मैं अगर गलत कोट कर रही हूँ तो उसको if someone of you knows about it can always correct. That shows the importance that when you are eating, you have to be focused on what is being given to you without distractions. ये तो दो चीजें that is relevant to mindful eating. So if from today onwards, if we give ourselves 20 minutes of meal every day, 24 घंटे होते हैं, उसमें से अगर हम usually जो
सही तरह बैठ के खाते हुए नाश्ता और रात का खाना होता है. दोपहर में we are usually in the offices, so we are mostly talking to people, or we have less time to enjoy the food or whatever. So ये दो meals में if we can take ourselves time for 15-20 minutes to stay with the food, stay connected with what we are eating, and keep ourselves away from the distractions. मैं physical distractions की इस वक्त बात कर रही हूँ. There are a lot of other distractions that comes in your mindful eating as well. But for now, in this slide, we're talking about the distractions which are related to the physical distractions. TV बहुत मशगूल होता है, हमारे पास सारा दिन तो टीवी देखने का टाइम ही नहीं होता, हम तो रात में खाना खाते हुए टीवी देखते हैं. और उसमें भी मैं तो न्यूज जो है ना खाना खाते हुए सुन लेता हूँ. Now you can imagine the kind of stress our news give, जो उसमें से 3 खवातीनें एक स्क्रीन पे चीख रही होती हैं, 2 हज़रात किसी और स्क्रीन पे चीख रहे होते हैं. I would suggest, highly recommended, to keep yourself away from, especially the news channels while you're eating. Preferably away from any device that distracts you while you're eating. Now, one thing is that खाने के लिए जो mindful eating आप जिसको कहते हैं, उसमें you need to listen to your body. Now, what does that mean? That, your body would tell that the fullness, of eating. कि आपने जब खाना खा लिया और जब आप खाना खाना शुरू करते हैं, and when you are enjoying the food, so, your body will start giving you signals whether it's full or it's still hungry. And you should eat when you should stop eating when you think that you are satisfied, not when the plate is empty. So, इसीलिए portion size, जो mindful eating में या healthy eating में portion size matter a lot. That you should take small portions of food and then try to finish it and then go for the next one, rather than making a big plate. जो अक्सर हम अपने शादियों में या आजकल जहाँ पे रेस्टोरेंट्स में आजकल इफ्तार डील्स चल रही होंगी, आप लोग गए होंगे जरूर, जहाँ पे जितना खाना नहीं खाना होता उससे ज्यादा प्लेट में भर लिया जाता है. So I think, one thing is that you have to listen to your body. It will tell you when you would have the mindfulness, or you are connected to your body and the food. It will start giving you signals that you are done and you are satisfied with what you have eaten. क्योंकि आप smell, aroma, your connection, these all will lead to giving certain cues by your body that, this is the time you should stop eating and you are done. Now, the last 4 ones. जो चीज हम फूड के बारे में क्यूरियस नहीं होते, वो दैट इज हम पहले से ही शक्ल देख के बता देते हैं कि यार ये मजे का खाना होगा. इस पे तो तेल लगा ही नहीं है, तेल तो ऊपर आ ही नहीं रहा, इसका मजा इतना ज्यादा नहीं होगा. So, you need to be non-judgmental. You need to actually explore. आपने देखा होगा कि there is always more learning. There is a lot of curiosity in children. Why? क्योंकि वो हर चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. हम वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं और जैसे जैसे हमारी जिंदगी के मामला बहुत ज्यादा तेज रफ्तार हो गए हैं, हम नौकरियों पे लग गए हैं, 8-8, 9-9 घंटे हम नौकरियां करते हैं. हमने छोटी छोटी चीजों को अपनी में क्यूरोसिटी कम कर दिया. हमने अपने लर्निंग माइंडसेट को कम कर दिया है कि हम चाहते हैं कि हमें लर्निंग की जरूरत नहीं है. और फूड में अगेन वही बात करूंगी कि जो है फूड को हम एज अ लेस प्रायोरिटी रखते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेस प्रायोरिटी, जिनको हम बोल रहे हैं कि वो लोग लेस प्रायोरिटी वो खाना नहीं खाते. शायद वो लोग जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या जो अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाते हैं, वो भी जस्टिस नहीं कर रहे फूड के साथ. One very important thing is that you need to practice gratitude. आपको mindfulness का मतलब ये है कि आप जो चीज आपके सामने है उस पे आप शुक्र अदा करें उन लोगों का, सबसे पहले अल्लाह ताला का जिसने आपको फराहम किया, और उन लोगों का जिनकी वजह से वो आपके आपके सामने आया और आप वो खा सकते हैं. So why is it so? जैसे मैंने बात की कि mindfulness is not only about your connection with the food. Mindfulness is about your connection with the world and with the people around, with the things around, and that includes one of the things which is food. And gratitude
So it's one of the component to keep you humble, as a person, as an individual. छठी जो हमारी हैबिट आती है वो आती है आहिस्ता खाना और फूड को चबा चबा के खाना. उसकी कुछ साइंटिफिक पैरामीटर्स भी हैं और इसके जाहिर है हमारे रिलीजियस भी हैं कि एक निवाले को 70 दफा चबा के खाया जाए. एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे पास डाइजेशन हमें यूजुअली लगता है कि पेट में जाके होता है. यू ऑल एग्री? या कोई अगर थोड़ा बहुत भी साइंस का स्टूडेंट है तो वो मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत जवाब दे देगा कि हमें लगता है कि हम जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले डाइजेशन हमारे पेट में शुरू होता है. कितने लोग आप ये कहते हैं कि हाँ ऐसे ही होता है? I think मेटाबॉलिज्म का एक रोल होता है बहुत effective. What I used to hear when I was student in 9th class. वजीहा क्या कह रहे हैं? I'm sorry. Yeah, metabolism is something that digests our food. It goes first in metabolism में जाता है and then फिर वो हमारी digestion का process start होता है. नहीं, अभी हम मेटाबॉलिज्म की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ डाइजेशन की बात करें. खाना हजम कहाँ से होना शुरू होता है? खाना हमारा मुंह से हजम होना शुरू होता है. कौन बोल रहा है ये? मंजूर हुसैन साहब. जी जी जी. जो मुंह में जो हमारे लावा निकलता है उससे वो गलना शुरू हो जाता है. मंजूर साहब, लावा ये जरा मुश्किल है. सलाइवा बोलते हैं उसको. लावा. जी, जो हमारा थूक मुंह में बनता है, फर्स्ट स्टेप जो कि हमें लगता है कि जब हम खाना खाएंगे जब तक हमारे पेट में नहीं जाएगा वो डाइजेशन नहीं होता. द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन योर माउथ. और जो हम स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो हम लुआब जिसको कहते हैं, वो पहला होता है. एंड दैट इज द फर्स्ट लेवल वेयर योर शुगर्स आर ब्रोकन डाउन. और इसकी वजह से आप कहते हैं ट्राई टुडे दैट द मोर यू च्यू the more it converts. And the first level of digestion, it's not only physical digestion, it's a part of the chemical digestion that starts too. तो अगर हम उसको इससे रिलेट करें कि हम किस तरह अल्लाह ने हर चीज को या हमें ये चीज बारहा तौर पे बताई गई है जिसको हम प्रैक्टिस नहीं करते कि दिवाली को मुंह में रख के ज्यादा चबाया जाए. हमने सबने सुना है, बचपन से हमारे अम्मा अब्बा बोलते थे कि जल्दी जल्दी नहीं खाया करो, बड़े निवाले नहीं लो, छोटे निवाले लो, बहुत उसको चबाया करो. बट never listened. Why? Because at some point we want scientific validation to it, and there is scientific validation that the first step of digestion along with the physical digestion occurs in your mouth, and that is why it is said that you should eat slowly and you should chew your food a lot. Now, the last of the 7 habits is to let go of distractions. एक हमने बात करी physical distraction की. Now, this is the mental distraction, stress, right? और सबसे ज्यादा तो हमें ये लगता है कि जल्दी से खाना खा ले, दूसरा काम करना है, ये काम कर ले, वो करना है, शाम हो गई है, रात हो गई है, मुझे तो अभी बर्तन भी उठाने हैं. वजीहा, खाना खिला दूं जल्दी से, सब लोगों को जल्दी जल्दी बर्तन उठाने. आई ओनली हैव हाफ एन आवर, राइट? एंड देन उसके बाद बच्चों को स्कूल का काम कराना है, सुबह यूनिफॉर्म इस्त्री करने हैं, बहुत सारे काम. बट दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर स्ट्रेसेस. देखिए, जिंदगी में आप कुछ वक्त अपने लिए निकाल सकते हैं. सी, यू आर एन इंजन that needs a fuel, and if the fuel which you are consuming is not working for the engine, then what's the use of it? अगर जो फ्यूल आप इनटेक कर रहे हैं वो आपके जिस्म को लग ही नहीं रहा, हाँ वो आपको थोड़ी बहुत एनर्जी दे देगा for you to survive for another 24 hours, but जिस्म को लगने का मतलब ये है कि आप पे positive effects लेकर आ रहे हैं. If the food is not able to bring in positive effect, then it's of no use to nahi keh sakti, but it's not serving the purpose what it's meant to be. So for 15-20 minutes, 40 minutes, 24 घंटे में अपनी जिंदगी में you are going to transform your life if you just take out 20 minutes morning and 20 minutes in the evening. दोपहर में okay fine, I mean you can just because practicing होती है weekends पे, of course you can practice that. लेकिन एक normal days में we all understand working in the corporate sector that we cannot take that time. But 40 minutes, it's hardly 40 minutes every day.
to actually change your mind towards food. And once you start developing these few habits, जिसमें खाना आराम से खाना है, चबा के खाना है, स्ट्रेस को थोड़ा देर तक साइड पे रखना है, जिसमें से सेल फोन्स भी is one of the major causes. हमारे पास ज्यादातर सेल फोन्स पे अपनी जॉब की ईमेल्स कोई भी होती हैं, तो रात के 9:30 बजे भी जस्ट हम खाना खा रहे होते हैं, तो we are so anxious that we have to pick up the phone and respond to it. But 20 minutes is not going to make a difference for anyone in the world, unless and until you are associated with with a profession that needs immediate requirement for you to respond. मतलब अगर आप ER के डॉक्टर हैं या आप किसी अस्पताल में कोई नौकरी कर रहे हैं और वहां पे आपका response time should be quick, but in rest of the world does not stop, even if you are here or if you're not there. But for a lot of people, you being there physically and mentally present is will matter a lot, not only to yourself but for the people who are associated with this. So we are all good with the 7 habits. Okay. And this is we've already kind of discussed it is not only about just what you are eating, but it's about opening your spiritual doors to what is there, what is being given to you, and how blessed you are, and how much you appreciate life and what has been given to us. So, and especially in the month of Ramzan, हम बार-बार Ramzan and way forward की भी बात करते हैं, because it's kind of a एक होता है ना कि आपकी रमजान के महीने में rehauling हो जाती है, आप rehaul करते हैं, and then you work for another 11 months and work towards towards the goal which you have. So this is a month हम automatically रमजान के पहले रमजान से ही हम spiritually high हो जाते हैं. हमारी सारी चीजें connections हम शुरू होना शुरू हो जाते हैं. Why? Because we have kind of trained our bodies, our mind towards it. हम normal दिनों में अगर हम रोजा ना रखें तो I don't think so हम 9-10-12 घंटे बगैर पानी के रह सकते हैं, बल्कि 12 घंटे से भी ज्यादा. अगर आपका पूरा रोजा जो खत्म है, it's more than 12 hours, और normal days पे हम नहीं करते. Why? Because we are spiritually connected. Why? Because we have tamed our body and our mindset towards that. Okay, fine, this is the month in which we fast, and this is the time period in which we are not going to eat and we are not going to drink water. So हमने अपने आप को, अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्यून कर लिया है. So mind is the most beautiful thing. हमें लगता है कि हम अपने दिमाग को ट्यून नहीं कर सकते, but trust me, mind is something which is in your hand. And when you take your mind in your hand, there is nothing in the world which you cannot achieve. हम होता ये कि उसको चलने देते हैं और उस पे कंट्रोल अपना लूज करना शुरू कर देते हैं. जब when you will be in control of your mind, the whole world is going to be in your hand. Okay, overall health and well-being. अब mindful eating के 3 बहुत major advantages हैं. So the first one is the weight management. Now, how the weight management works? It's a very simple process. मैं कोई बहुत ही rocket science किस्म के facts and figures नहीं बताऊंगी. I'm just going to talk about the basic principles, how the mindfulness can work for your weight management. Okay, first is that you have to listen to your body cues of fullness and hunger. You should know कि अब प्लेट में निकाल लिया है. I do understand. I'm a believer that जो रिस्क है उसको जाया नहीं करना चाहिए, लेकिन रिस्क को फिर कम भी ले लें ताकि वो जाया ना किया जाए. हमारे पास होता है कि हम प्लेट भर लेते हैं और उसके बाद उसको जाया करने निकलते हैं. So listen to your body. आधा पेट खाया जाए, इस बारे में भी बोला गया है कि अपना पेट आप इतना खाओ जितना तुम्हारा आधा पेट भरे, and there's a lot of scientific relevance to it as well. So your body, start listening to your body. इतना बहुत दफा खाना बहुत अच्छा होता है. निहारी और तंदूर की रोटी सामने अगर आ जाए फ्रेश बनी हुई, तो who's going to stop at one तंदूर की रोटी, right? We all know that. कोई भी नहीं रुकेगा. पिज्जा आ जाए. I mean, there's a lot of different kind of foods which you savor, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करके हमें खाना चाहिए. But in etadal, excess would lead to the long-term effects on your body. Make healthier food choices. Now, this is a very subjective, plus
nutrition based kind of a question. Healthier choices क्या होते हैं, जैसे फरूख साहब ने शायद कहा था कि आप शुगर को जिंदगी से हटा दें. ना शुगर बहुत मुख्तलिफ किस्म की होती है. शुगर तो आपकी फ्रूट्स में भी होती है. White sugar, yes, you should try to exclude it out from your daily routine. Once in a while, if it's eaten in etadal, I don't think so that should be a problem, unless and until you have some medical disease or medical condition. Fat, yes, there are a lot of data. There's a lot of data भी है और sites भी हैं बहुत सारी जो कि आपको ये बता सकती हैं कि कौन से oils are better for you to eat and which oils should be avoided and which can easily be taken. सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हम healthier choices अपने 2-3 वक्त के खाने में, जो सुबह के नाश्ते में हमने okay fine, we had a good poached egg in the morning with a brown bread, it's fine, I had a good breakfast. But what happens is that when I got home, रात में जब मैं घर आके थकी हुई, सबको सुला विला दिया, सारा काम कर दिया, and you're just working or just scrolling off the TV, you picked up a pack of chips. Now, that is the mistakes which we make. जो हम अपनी cravings में जो unhealthier food choices को indulge करते हैं, that should be primarily replaced. और बाकी अगर आपकी जो healthier choices हैं, of course, जैसे हम white flour को avoid करने की बात करते हैं, you can have all grains in your food, in your diet, have as much legumes as you can. अल्लाह मैंने इतनी किस्म की मुख्तलिफ vegetables बनाई हैं, include that in your daily routine. Green salad, आप लोगों ने healthier plate जरूर देखी होगी, अगर नहीं तो it's all available on the internet. कि healthier plate में they say that half of the plate should be filled with greens and then the brown portion जो हमारे Asian cuisine का majorly part होता है कि हमारी plate में वो brown वाला हम गोश्त को इतना भून देते हैं कि वो ब्राउन रंग के सारे निकल आते हैं और सब्जी को भी इतना भून देते हैं कि वो ब्राउन रंग की हो जाती है. So you limit that onto your plate and the grains can be in one portion, the other portion can be your meat, your dairy, and the half of the plate should be your salad. So ये वो सारी चीजें जो शायद हम लोग जो भी health conscious होते हैं वो इतनी दफा इंटरनेट पे देख चुके हैं कि शायद अगर मैं अपना इस वक्त माइक बंद करूं और आप लोगों से बोलूं कि इस बारे में बात करें तो we can talk the whole probably the whole day on it. All right, so going to the third point is reduce emotional eating. इसका एक बड़ा अच्छे एक आगे slide भी आ रही है. Emotional eating is the worst of the eating type. और अभी जब मैंने बाप से बात करी कि this is when we make the bad choices. This is when we do not make healthier food choices, especially when you are eating, when you're doing emotional eating. Emotional eating में होता क्या है कि आप you are not feeding your body, you're actually feeding your emotions. और उसका and you just find that comfort in food. And how you can do it, how you can reduce emotional eating is to find yourself ways in which you can reduce your stress other than eating. Going out for a walk, doing meditation, आप किसी sit with someone whom you are close to, talk to your friend, things like that who can give you emotional support rather than taking food as your emotional support. So this is something which you would have to work on yourself, and that is the only way you can reduce emotional eating. Now, reduce stress. Stress is, there is a physical stress, there is mental stress. बहुत सारे stresses ऐसे होते हैं जो कि आपके daily life के stresses भी होते हैं, and then when they start piling up, they become chronic stress. Now, of course, stress reduce करने के लिए there are a lot of ways in which you can reduce your stress. Go out for a walk, start going to gym, sit with people whom you enjoy talking to. And in any case, if you think that nothing is helping, then you probably would need a professional opinion on it. हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी से
अपने स्ट्रेस से रिलेटेड या डिप्रेशन से रिलेटेड किसी से बात करने जाएंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इट्स अ मेडिकल कंडीशन. हम ये कभी भी किसी को बुली नहीं करते या कभी भी उससे दूसरी दफा क्वेश्चन नहीं करते जब उसको ये बोलते हैं कि यार मेरे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, या मेरा आजकल शुगर के मसले लग रहे हैं तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ. लेकिन ये कि जैसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, the moment the first thing you'll hear from your own family members will be ऐसी कोई चीज नहीं होती तो जो है ना सोचते ज्यादा, सोचने की जरूरत नहीं है. See, we need to understand that depression, stress, anxiety, they are all chemical related issues too, which happens in our mind, and it needs treatment from professionals. So if you think that any point in time you think that the stress level is going so high, then you need to consult to a professional rather than trying to treat it on your own, and especially by emotional eating. So don't do that. All right, improve digestion and reduce digestive issues. अब ये कैसा होता है जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं, तो ये दो काम कैसे हो रहे हैं कि आपका डाइजेशन भी इंप्रूव हो रहा है और आपके डाइजेस्टिव इश्यूज भी नहीं हो रहे हैं. ओके, ये हम रोड मैप इसका बना हुआ है और हम थोड़ा बहुत इसको 7 हैबिट्स में डिस्कस भी कर चुके हैं. There is a slide which you will see which is a scientific slide जो कि आपको नजर आएगा कि माइंडफुलनेस किस तरह आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है. अब आप देखेंगे माइंडफुलनेस से आपका माइंडफुलनेस दो चीजों से अगर हम लिंक करते हैं, स्ट्रेस में होता क्या है, ऑल्टर्स मोटिलिटी. अब मोटिलिटी किसको कहते हैं, जब आपके डाइजेशन में एक्सक्रीशन का जब प्रोसेस आता है या एक्सक्रीशन से या उससे पहले वाला भी जो प्रोसेस होता है उसमें मोटिलिटी, इसका मतलब है आपको आपके गट को मुस्तकिल तौर पे रिलैक्स करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है. जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका मोटिलिटी का जो इफेक्ट है वो ऑल्टर हो जाता है. अगर फॉर एग्जाम्पल आपका आप लोगों ने इतना बहुत थोड़ा आप सब लोगों का अंदाजा होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी स्टमक की और इंटेस्टाइन की जो मसल्स होती हैं वो या तो रिलैक्स कर रही होती है या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है. इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पे उनकी मोटिलिटी हो रही होती है और स्ट्रेस में वो रिड्यूस हो जाती है. इसका मतलब ये है कि जो आप खाना पेट में आपका जाता है और आपके मसल्स क्योंकि सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, इसका मतलब वो डाइजेशन भी नहीं होता और आपके फिजिकल डाइजेशन का मतलब ये है कि आप बड़े जो फूड के पार्टिकल्स हैं उनको छोटे फूड के पार्टिकल्स में किया जाए वो नहीं सही तरह पे हो पा रहा होगा. दूसरी चीज, स्ट्रेस में आपका जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स योर जीआई ट्रैक, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, वो रिड्यूस हो जाता है. जब आपका ब्लड किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में कम होगा, इसका मतलब ये कि उस ऑर्गन की जो फंक्शनैलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है. तीसरा पॉइंट, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है. फिर उसके बाद डिक्रीज सेरोटोनिन प्रोडक्शन, ये वो वाली चीज है जो कि मजीद आपकी डिप्रेशन को और एंजाइटी को एनहांस करता है. फिर उसके बाद आपको और भी चीजें यहाँ पे नजर आ रही होंगी जो कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज रखी हुई है, एसएनएस, डोमिनेंस, सीएनएस, ईएनएस, ये सारी चीजें रखी है. सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. ये सारी आपको नजर आ रही होंगी कि ये दो सीएनएस आपकी जो दिमाग की जो जितनी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो चीजें चल रही होती हैं वो डिक्रीज हो जाती है स्ट्रेस में, और आपकी एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इसका मतलब पेट से रिलेटेड जितनी आपकी नर्वस सिस्टम में इंटरवेंशन है वो भी डिक्रीज हो जाती है. आपका स्टमक एसिड डिक्रीज होता है जो कि बहुत जरूरी है आपकी केमिकल डाइजेशन में. जो आप फूड खाते हैं उसको ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना जो कि आपके जिस्म में एब्जॉर्ब हो सके, उसकी भी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है. एंड व्हेन यू हैव you know that this all causes because of stress, but when you have mindfulness eating, when you eat connected to the food, you know what you are eating, you know what kind of choices you are making in eating food, you show gratitude in what you have, you eat slowly. This is all mindfulness, and what it does that it increase your digestion process. It increases the enzymes in your body, the gastric juices that all help in the absorption of the nutrients which are required to your body and which is going to sustain you. वो फूड जो कि माइंडफुल तरीके से खाया जाए, that only serves as a fuel. इसके अलावा वो सिर्फ एक ऐसा मवाद बन जाता है आपकी बॉडी में जो कि इंटरनली आपकी बॉडी में रहता है और उसके बाद उसका अखराज हो जाता है. वो बॉडी के लिए कोई फायदेमंद
नहीं रहता. Third is it reduces stress and, gives me a healthy me. There's, of course, some natural course, which we all need to understand. Age, other factors, ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको stress cause करती हैं. But there is one thing which is evidently proven कि stress से you age quickly, and aging is not only your body. Wrinkles पड़ गए, आपके आंखों के नीचे छाइयां, अब मुंह पे छाइयां आ गए, wrinkles आ रहे हैं, आपकी physical activity compromise हो रही है. But it's also aging of your mind. It causes conditions like insomnia. It causes, conditions like depression, obesity, chronic illnesses, stress. जो बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को stress से उनको, heart attack हो गया. So, all these factors, they can lead to certain chronic or acute illnesses if you're not able to control the C. Now, what is the C? There is this stress hormone, which is called as the cortisol. And it is proven that, the people, there have been qualitative researches done that the people who eat mindfully, they produce less cortisol in your body. It's a natural stress hormone. जैसे ही आप stress में जाएंगे, cortisol आपका level high हो जाता है. And the worst thing about this cortisol is that it increases your heart rate and blood pressure. आप ये देखिएगा कि जब आपको anxiety होती है, कोई panic attack होता है, तो आपको ये चीज फौरन फील हो जाती है कि यार मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया, blood pressure बढ़ जाता है, palpitation शुरू हो जाती है, sweating शुरू हो जाती है. ये सारी चीजें आप जो stress hormone cortisol है, that does to your body. And when you have this mindful eating, when your digestive system is working good, when you know that your body is responding to the food you're eating, this stress hormone, the reduction in this stress hormone is going to lower your heart rate, lower your blood pressure. You will be more calmer, you'll be more connected, you'll be more focused to the surrounding and to yourself. Fizza, please do keep track of the time. Okay. Practice mindful eating. Ab now practice kaise kar sakte hain is going back to the 7 habits which we all referred to. So Manzoor Hussain Saab, can you refer to any one of the 7 habits which we discussed? Okay, Manzoor Saab nahi hai. Shahzad Barsi, can you just help me to repeat any one of the 7 habits which we discussed a little ago? Assalamu alaikum. Thanks for having the show. What I want to say, we have to focus in our food because we are discussing the mindfulness of the food, the healthy practice. So whenever we are eating, we should concentrate on our food, what we are eating. So it will helpful, with our digestion system, also with our soul, as you said earlier. This is just I want to say. Okay, thank you. Tehman Alam, if you are around. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. देखिए इसमें ये है कि हम जो खा रहे हैं उसको जो है ये नहीं कि बहुत जल्दी खाएं. मतलब आपने शायद 20 बाइट्स बताई थी, कितनी ये है उसमें लेके खाना है इसको 70 दफा. और 70 दफा चबाना है. It's just too much, I understand, but even if you can match up with half of what is being recommended, I think it's gonna work. जी जी. और न्यूज़ नहीं देखनी है. न्यूज़ नहीं देखनी है. ये तो आपने बिल्कुल ही ऐसी बात की, टेक अवे हो गया आज का ये कि हमें न्यूज़ नहीं देखनी है, क्योंकि आई थिंक सबसे ज्यादा कोर्टिसोल की लेवल्स आपकी ये न्यूज़ हाई करते हैं आजकल के जमाने में. वो एक कोई बहुत ही छोटी केला 340 रुपए, आज की ताजा तरीन खबर. अब वो उसको लाल टैग करके सारा दिन दिखाते रहेंगे. Well, that is where the news are going. So I think yes, TV नहीं देखना है, or any of the electronic devices that distracts you or disconnect you from what you are eating. So I think that should be the take home. Challenges and strategies हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं.
एक और एक आपने बड़ी मजीद सी चीज की होगी कि अक्सर अब इसमें से आई वुड फाइंड माई सेल्फ गिल्टी, मैं पहले से बता देती हूँ कि हम जो खाना खा रहे होते हैं और जो मोबाइल पे खाना देख रहे होते हैं वो दोनों बिल्कुल अलग चीज है। सही है, आप देख रहे होते हैं वीलॉग्स की कि ये नल्ली निहारी की पता नहीं कौन सी बिरयानी बंस रोड की, एंड देन आपके सामने जब आपके घर की साफ सुथरे दाल चावल लौकी की सब्जी आ रही होती है, सो यू स्टार्ट काइंड ऑफ हेटिंग इट, राइट? आई अंडरस्टैंड, I agree to being guilty to it. और जब आपके सामने वो ग्रीन सैलेड्स और वो सारी चीजें रखे हुए आते हैं और आपके पास जो डील्स आ रही होती हैं कि बर्गर की और पिज्जा की कौन सी डील्स आ रही है, so it's all distraction. It's all not being grateful to what you have on your plate. So I think again मोबाइल फोन को हटा दें और स्पेशली खाना खाने से पहले ऐसी वीडियोस ना देखें, ताकि आपको जो आपकी टेबल पे जो चीज आ रही हो उसको आप सब्र शुक्र से और उससे कनेक्टेड होके उस चीज को खाएं। ये हम लोग बहुत करते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा अगर if there is any statistical data which can be pulled out, especially of Pakistani population who have visited the food sites during Ramzan and during fasting, I think it's going to be the highest in number के भूख पे सबसे ज्यादा हम food की sites देखते हैं। So avoid all these distractions. Avoid anything that takes you off the focus of what you have in your mind. Emails. Again, मैं वही बात कर रही हूँ कि हम खाना खाते हुए हमारे लैपटॉप्स खुले हुए होते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में I understand there are a lot of challenges, but again 40 minutes out of those 24 hours, just 40 minutes, 20 minutes ज़्यादा लगते हैं, सुबह में बहुत भागम दौड़ी होती है, 15 minutes in the morning and then maybe 20 minutes in the morning, you would see the difference in your lifestyle. And or वो 20 minutes I mean if we assess ourselves and be realistic to how much undivided attention we give to our family members, that is your table and your food table is actually the prime location where the whole family sits. And I think if you can just take off all these distractions, the kind of quality, the kind of time you'll be giving to your family is also going to be an added value to mindful eating. Okay, again मैं बार बार यही बात करती हूँ, वक्त कहने को बहुत है और होता नहीं है। अब इसको अलग तरीके से लीजिए, मुझे नहीं पता कि मेरे पास जिंदगी के कितने लम्हात हैं, लेकिन जो लम्हा है उसको मैं सही तरह से जी लूं। Live the life. I have a life, but you need to live the life. और फिर मैं वही बात करूंगी, सबसे ज्यादा हमारे पास मसला ये होता है कि खाने को बहुत तेजी से खाया जाता है। Give food time. जब ये हम बात करते हैं ना कि सारा काम तो रिस्क के लिए किया जा रहा है ना, और वो जो रिस्क आपके पास आ रहा है, जब वो आ जाता है उस वक्त आप उसको टाइम नहीं देते, उस वक्त आप उसकी कदर नहीं करते। So give yourself time, give all the gratitude you can to Allah and बहुत सारे मेल हजरात हैं, to your wives, to have it on your table so that you can enjoy the food, and for the females for all their men who earn and bring it on the table. So it's all about gratitude, and it's all about the scientific element too. जो हमने बात की ना कि खाना चबाना ज्यादा क्यों है, डाइजेशन के प्रोसेस किस तरह बेहतर हो जाते हैं, कोर्टिसोल के लेवल किस तरह कम होते हैं, it's all related. We just need to understand that. ये हम बात कर चुके हैं। इमोशनल ईटिंग में we do not feed our body, we only feed our emotions, और वो जितने इमोशंस को आप भरते चले जाते हैं वो उतना मोटा होता चले जाता है, वो कमी उसमें फिर भी नहीं आ रही होती। So the first thing is that you need to fuel your body. Now fueling your body can be going for a meditation, right? Fueling your body can be talking to someone whom you can actually vent out if you are in a emotional spree. We all understand, we all go through it, and it's not something which is not normal, and it should be taken normal and should be dealt with. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूँगी यार नहीं मुझे तो emotional swing आता ही नहीं है. Everyone goes through it, and it's like every day. There would always be dips, there would always be highs and lows in your life, but you just need to be mindful in how you respond to it. Okay, so yeah, some things never change, but yeah, you can actually try to change a few bad habits. Few people have this habit of खाना खाने के बाद तो यार मतलब सिगरेट के यार तो हजम ही नहीं होता खाना. Well, smoking has nothing to do with digestion. So scientifically,
it doesn't correlate, but yes, it's a habit which you should reduce, because there are a lot of, I'm not going to start a campaign of stop smoking here, but yes, smoking is the major cause of major chronic illnesses in a lot of people. Okay, अब जब हम स्पेशली जब हम बात करते हैं, जो हम कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, कि हमारे पास ये होता है कि हर दफा फ्रेश फूड नहीं होता, अवेलेबिलिटी नहीं होती, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, जिस तरह के इकोनॉमिक हालात भी आजकल चल रहे हैं. बट फ्रेशनेस या फ्रेश फूड की अवेलेबिलिटी हमारे पास अभी मतलब अल्लाह का शुक्र है, हम उस तबके से ताल्लुक रखते हैं कॉर्पोरेट में सारे लोग, कि हमारे पास ये एक मेजर चैलेंज नहीं है. लेकिन हम ही लोग हैं जो सबसे ज्यादा क्रॉनिक बीमारियों में, दिल के अमराज में और डायबिटीज में और इसमें उसमें फंसे हुए हैं. जिन लोगों के पास बाकी में इन चीज की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, दे आर मोर फंक्शनल देन because of the physical activity they have, or yeah, mindfulness, yeah, they have more gratitude than we do. So strategies is again जो हम बात कर चुके हैं. So first, turn off your electronic devices, that includes your TV. And yes, thank you so much, Tehman. Do not listen to the news for 20 minutes, especially when you are eating. Take a few deep breaths. It increases your circulation towards your GI, and that helps in your gastric enzyme secretions and helps in digestion. Pay attention to the smell of the food. बहुत दफा ऐसा होता है ना कि खाने की खुशबू, हम कितनी दफा अपनी मतलब घर में कोई बड़ी दावत हो रही हो और मुख्तलिफ किस्म के खाने बन रहे हो तो घर में स्मेल आती है, बट हम टेबल पे बैठ के कभी भी फूड को उस तरह से एंजॉय नहीं करते जितना हमें करना चाहिए. उसकी तारीफ करनी चाहिए या उसको एंजॉय करके खाना चाहिए. Be patient to yourself, be kind to yourself. It's a long process. आपको पता है कि कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए it takes a lot of effort, persistence and time, but it is not something which you cannot do. Mind is totally in your control, in our control. अल्लाह ने उसकी सारी दाग बेले हमारे हाथ में दी हुई है. We don't need the mind to run us. It should be run by us. And if you have that thread in your hand, how to move around with the mind just by creating certain habits, I think our the quality of life which we live would be far more better. See, I'm not saying that it's going to change drastically. ऐसा नहीं होगा कि आज करने से कल मेरे हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे. There would always be ups and downs, but you would know how to manage. There would always be conditions which are going to be non-conducive for you. But if you know how to tackle them rightly at the right time, I think that's the whole game of mindset. बहुत बड़े-बड़े numbers लिखे हुए हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से. 150 मिनट, 75 मिनट, 10,000 स्टेप्स, ये क्या लग रहे हैं? कोई बताएगा? ताहिर इकबाल साहब, कैन यू कमेंट? ये क्या दिया हुआ है हमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों ने? जी, I think they are talking about the daily walk. We should walk daily at least 150 or 75 minutes or 10,000 steps. मुश्किल नहीं लग रहा है? 150 मिनट का मतलब कितना है? ऑलमोस्ट 2.5 घंटा. मतलब जिंदगी घंटे में शारा फैसल पे निकाल देती हूँ ऑफिस आते जाते हुए और उसके बाद 6 घंटे में सो जाती हूँ. ठीक है, और उसके बाद they are talking about overall steps in a day, जो कि हम अपने बहुत घर में वॉक कर लेते हैं. कुछ ऑफिस हो गया, मॉल हो गया, फिर बस स्टॉप से लेके आपके घर तक की वॉक. सो there are kind of वॉचेस, रिस्ट वॉचेस, जिसमें आपके स्टेप्स काउंट आते हैं डेली के. ओवरऑल पूरे डे में आपके स्टेप्स फिर भी इतना मुश्किल नहीं लगता बिश्रा. बट 150 मिनट, 2.5 घंटे में जिंदगी में 15 मिनट नहीं निकाल पा रही सही तरह खाने के लिए, 150 मिनट वॉक के लिए कैसे निकालूंगी? ये तो बिल्कुल चैलेंज है. यू आर राइट. अब इस चैलेंज को आसान किस तरह किया है? What they have done is that they have spread it over a week. So if they're saying 150 minutes, you need to have moderate intensity aerobic activity. Okay? You have to spread it over a week, and you can do it at least thrice in a week, 3 days in a week. तो इसका मतलब 150 का मतलब है कि आपको ये बोल रहे हैं 50 मिनट, जो कि मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक है. साइकिलिंग कर ली, वॉक,
आपने brisk walk पे चले गए, that is all moderate intensity aerobic activity. 75 minute is vigorous intensive aerobic activity. 75 को अगर आप divide कर लें 3 दिनों में, तो it's hardly 25 minutes. और ये vigorous activity है जिसमें आपके push-ups लगते हैं, जो hit की ज्यादातर चीजें होती हैं कि आप वो सारी चीजें कर रहे हैं, which is spread over a week. Or फिर strength training, they have again spread it over 2 to 3 days. और 10,000 steps. I was just giving myself an average. I have it in my phone, and I usually carry the phone and Fitbit भी था, तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा मैं जरा ये देख लेती हूँ कि how much do I walk in the office? Because I spend like 8-9 hours in the office. तो मैंने जब देखना शुरू किया तो 800-900 कदम से ज्यादा मैं चली नहीं थी, जिसमें से थोड़े बहुत 100 कदम तो मेरी गाड़ी से यहाँ तक के होंगे. और उसके बाद what we don't do is that even while we are in our offices, हमारे पास easy is to pick up the extension and call someone, right? Phone पे बुला लो, आवाज दे दो. So just changing a little bit of my lifestyle in the office, क्योंकि ज़ाहिर है हम जिंदगी का बहुत हिस्सा ऑफिस में गुजारते हैं. I stopped using the extension, and my step count from 800 to 900 increased to 4,000 per day. So if I'm able to achieve 40% of my target within that, so इसका मतलब है घर जाके तो मैं 20 मिनट भी walk करूंगा तो I'll be good. I'll complete my 10,000 steps. So just monitor all these things. आप ये देखें कि आप चाहे अपने सबऑर्डिनेट से या अपने बॉस को तो खैर फोन जरा कम ही करते हैं, बॉस के पास जाना ही पड़ता है, लेकिन ये कि हम यूजुअली अपने जूनियर्स को बुलाने के लिए, अपने कोलीग्स से बात करने के लिए, we just pick up the phone. It's easier for us just to give them a call and talk to them, or just drop them an email. Try to go and talk to them in their rooms and in their cubicles, and you will see the activity profile in your daily work would definitely increase. And especially give yourself that if you have work which requires you to sit for long hours, then you have to give yourself, set up a timer that you have to give yourself a break after every 2 hours to move around, to roam around, or to stretch a little bit in the cubicle wherever you are sitting. So just spread it out throughout the day so that you are giving yourself some kind of physical activity throughout the day as well. So I'm just going to start winding up my presentation here because it's already 55. I only have 5 minutes left. So देखिए, पुराने mindset से you would never get new results unless and until you have a new mindset. So if you are looking for new results, set up your mind with a new mindset. And how that new mindset would be created? Practice gratitude, positive self-talk. I love myself. I mean, there was this movie, I don't remember, कि मैं अपने आप को बहुत अच्छी लगती हूँ. मैं अपने आप को बहुत अच्छा लगता हूँ. That's the positive self-talk. I am just good as who I am and what I have been made by Allah. Surround yourself with positivity, with positive people. Keep the negative ones out of your life because they are going to increase the cortisol in your life, और उसके बाद फिर digestion भी खराब हो जाएगी. So keep them out of your life. Practice mindfulness, exercise regularly, learn new things. Don't forget to take care of yourself. If you would not care for yourself, there is going to be no one in the world who would take care of you. Set goals. आज का गोल क्या है? आज का गोल ये है कि 20 मिनट न्यूज नहीं देखनी है, सेलफोन्स को साइड पे रखना है, फूड को एंजॉय करना है, अपने साथ जो घर वाले बैठे हैं उनके साथ ग्रेटिट्यूड के साथ what we have on the table, आज इफ्तार की टेबल पे this is what we are going to practice. Do it for a couple of days and this is going to be your lifestyle, not only in Ramzan but for the next of the year. Would end it here. Oh Allah, I ask you for well-being in this world and in the hereafter. So thank you so much for all of you for bearing me for 60 minutes non-stop, and you have been wonderful participants. Thank you, all of you, and I'm open to questions if there are any, or else we'll just close it here. Thank you. Thank you, Mr. Umaimah, for sharing the useful knowledge with us. And I would just like to repeat some points which I got from your wonderful session today. I'm really used to it. Whenever I'm going to eat my food, I want to listen to the news, whether I'm watching on the TV or whether I'm watching on my mobile. This is what I was always used to do it. But from now, I will try my best to avoid it. I will not do that.
So this is the first lesson I learned from your this session. And the second thing is the point you raise is distractions. We should avoid the distractions, and we should pay attention to our food. Whatever the food we have on our table, we should say thanks to Allah. We should say Alhamdulillah, whatever we have. And the last thing I would like to say that we should eat to fuel our body, not to fuel our wishes or something like that. No. And there is a saying in Urdu, utna khaएं जिससे जिंदा रहें, ना कि जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए. Thank you so much. Goodbye from my side. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone for joining us today for this insightful webinar. Thank you, Umaimah, for such an interactive session. We hope you all found the session informative and valuable. We look forward to seeing you again. Have a great day. Take care. Also, we have this feedback form that I have posted on the chat. Kindly fill out that form. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you, Allah madam. Hafiz, Thank you. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Thank you.